हेलो एवरीवन। तो हम देखेंगे हमारे लेबोरेटरी अपरेटस। लेबोरेटरी अपरेटस क्या होते हैं? जो हमारी लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, इन्हें हम लेबोरेटरी अपरेटस कहते हैं। तो हम देखेंगे आगे एग्जांपल्स ऑफ लेबोरेटरी अपरेटस एंड इसकी यूज़ देखेंगे। लेबोरेटरी अपरेटस में सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल होता है बीकर होता है। बीकर आर यूज़फुल एज ए रिएक्शन कंटेनर और टू होल्ड लिक्विड और सॉलिड सैंपल्स। दे आर ऑल्सो यूज टू केज लिक्विड फ्रॉम टाइट्रेशन and filtrate from filtering operations. Bunsen burner. Bunsen burner are source of heat. Burette are for addition of a precise volume of liquid. The volume of liquid added can be determined to the nearest 0.01 ml with practice. Clay triangle are placed on a ring attached to a ring stand as a support for a funnel, crucible or evaporating dish. Dropper are a addition of liquid drop by drop. Glass funnels. Glass funnels are for funneling liquids from the container to another, or the filtering when equipped with filter papers. Erlenmeyer flasks are used to contain reactions or to hold liquid samples. They are also useful to gauge filtrates. Graduated cylinders are for measuring of an amount of liquids. The volume of liquid can be estimated to the nearest 0.1 ml with practice. Hot plate can be also Hot plates can be also used as source of heat when an open flame is not desirable. Pipettes are used to dispense small quantities of liquids. Ring stand with rings are for holding pieces of glassware in place. Test tubes are for holding small samples for containing reactions. Test tube holders are for holding test tube when tubes should not be touched. Tongues are similar in function to force caps but are used for larger times. Volumetric flasks are used to measure precise volume of liquid or to make precise dilution. Wash bottles are used for dispensing small quantities of distilled water. Watch glass are for holding small samples of or for covering beakers or evaporating dishes. Wire gauge on a ring supports beaker to be heated by Bunsen burners. Microscope is an optical instrument that uses a lens or a combination of lenses of produce magnified images of small objects, especially of objects too small to be seen by the unaided eye. लेबोरेटरी इक्विपमेंट देखेंगे अब हम। इसमें सबसे पहला है बैलेंसेस एक होती है वेइंग मशीन, भी होती है एक वेट मशीन। आर यूज्ड टू डिटरमाइन द मास ऑफ अ रिएजेंट और ऑब्जेक्ट्स। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ ट्रांसमिटेंस of a liquid samples. Fume hoods are used to ventilate noxious or harmful gases. Safety measures inside the laboratory. हम सेफ्टी मेजर्स देखेंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी लेबोरेटरी में। Keep bags away from burners
नेवर ईट ड्रिंक्स और स्मोक वाइल वर्किंग इन द लेबोरेटरी। सबसे पहले जो हमारे बैग्स है उन्हें हमें बर्नर या फिर फ्लेम से दूर रखना चाहिए, और लेबोरेटरी में कभी भी खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, एंड वर्किंग करते समय हमें ध्यान देना चाहिए इन सारी चीज़ों का। टाई बैक लॉन्ग हेयर, यानी कि हमें बालों को हमेशा बांध के ही रखना चाहिए। रीड लेबल्स केयरफुली, हमें जो रिएजेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं लेबोरेटरी में उन्हें हमें अच्छे से यानी रीड करके यूज़ करना चाहिए। डिस्पोजल स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूज्ड मटेरियल इफ़ एनी अप्रोप्रिएट कंटेनर्स। जैसे हम कुछ भी यानी बोला जाए तो ग्लास का यूज़ करते हैं अपनी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, अगर वो हमें अच्छे से करना चाहिए। और अगर हमारे जैसे हमारे इंजेक्शन हमने किसी को लगा दिए, यानी जैसे ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद हमें इंजेक्शन को डिस्पोज कर देना चाहिए, वो भी अच्छे से, जैसे कि कुछ कंटेनर्स होते हैं। ओके। टर्न ऑफ गैस वैन नॉट इन यूज्ड, हमें गैस को ऑफ कर देना चाहिए जब हमें उसका कोई भी काम ना हो। और फिर वियर ग्लव्स वैन यूजिंग एनी हजार्ड्स और टॉक्सिक एजेंट्स, ग्लव्स पहनना चाहिए, हजार्ड्स हो सके टॉक्सिक का जब भी यूज़ करें, पर ऐसे नॉर्मली भी पहन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पैथोलॉजी होती है या फिर हमारे जो लेबोरेटरी रहती है उसमें बहुत ज़्यादा यानी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। वियर सेफ्टी ग्लासेस और गॉगल्स, सेफ्टी ग्लासेस इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि अगर कोई भी केमिकल हमारी आँखों में चला गया, इसीलिए हमें पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और हमें गॉगल्स डाल लेना चाहिए। स्टोर केमिकल्स ऑन स्लीव्स विथ लेबल्स, क्लीन अप यूर वर्क एरिया बिफोर लिविंग, जाने से पहले वर्क एरिया को क्लीन करना चाहिए। डू नॉट engaged in practical jokes or boisterous conduct in the laboratory. नेवर रन इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में भागना नहीं चाहिए, लेबोरेटरी में जोक नहीं करना चाहिए। एंड द यूज़ ऑफ पर्सनल ऑडियो और वीडियो इक्विपमेंट इज़ प्रोहिबिटेड इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में ऑडियो वीडियो नहीं करना चाहिए। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ unauthorized experiments is strictly forbidden. Never work in the laboratory without the supervision of a instructor. Always perform the experiments of or work precisely as directed by your instructor. Immediately report any spills, accidents or injuries to your instructor. Never leave experiments while in progress. Make sure no flammable solvent are in the surrounding area when lighting or flame. Do not leave lead Bunsen burner unattached. Turn off all heating apparatus, gas valves and water figures when not in used. Okay, thank you.